सबका विकास, सबका विश्वास. The union government is determined to bring about the perspective changes in every walk of the life, and it is our determination to strengthen local bodies to foster that change towards the building a new India and towards making India a $5 trillion economy. Honorable Prime Minister gave a call, minimum government and maximum governments. Modi ji's Independence Day speech said, and I quote, I repeatedly exhort my officials that after so many years of independence, can we not do something about cutting down red tape and reducing the involvement of the government in the daily life of the common man. The very appeal is a step towards major reforms at different levels of government that will not only enhance the performance of government but also make a common man a major stakeholder in developing the nation. I believe that one way of involving common man in governments is strengthening our local government. Local governments are the foundation of democracy, and we must work collectively to develop robust local self-government framework and address all issues. The word of a political territory in our country, the panchayat and the municipalities, the three-tier local self-governments are the bodies of elected ward members. They represent essential features in Indian democracy. An effective local government is a vital impacts. One, it is the primary vehicle to good governance, and two, it makes a community achieve to demand quality services and hold the authorities accountable. Here, the role of State Election Commission gains paramount importance for our democracy. Conducting elections to about 31 lakh elected representatives in the country every 5 years is a complex and challenging task, and every attempt must be made uphold the procedure sanctity for maintaining their credibility. The electoral process must be dealt with utmost transparency, along with managing grievances or resolving electoral disputes. We need to be constant evolve to develop a robust electoral framework to share a good practice. Telangana State Election Commission is launching a pilot project using face recognition technology to check photo electoral rolls in the forthcoming municipal elections. This is the one instance how use to the technology and electoral process enhances credibility. Similarly, there needs to be a greater thrust on research in area and capacity building of stakeholders for further ensuring effective functioning of Panchayat Raj institutions. In fact, both the State Election Commission and NIRD and Panchayat Raj play a key role in deepening the democratic systems in the country. The State Election Commission establishes local governments on the basis of elections. The NIRD, Panchayat Raj make a local governments perform the building their capacities. The two roles are indispensable for healthy functioning of our democracy. In Jammu Kashmir, local body elections held in November 2018, आप सब लोगों को मालूम है, लगभग 20 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है. मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी मंत्री भी हूं. अभी 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा पहली बार हम ग्राम पंचायत को पैसे दिया है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा.
कुछ अलग अलग गवर्नमेंट्स को मेरे को नाराज रहते हैं, आप पैसे क्यों देते हो, स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, ग्राम पंचायत को क्यों डायरेक्ट देते, तो हम क्या कर, हम हमारे को दो। हम वैसा भी गांव पंचायत के लिए पैसे स्टेट हेड ऑफ द अकाउंट को भेजने के बाद 2 साल 3 साल तक गांव को पैसे नहीं पहुंचते, उसमें कुछ कट कर लेते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने पंचायत राज सिस्टम को मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेटअप बताया। ऐसा ही जो जम्मू कश्मीर का जो पंचायत राज चुनाव होने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रेड्डी को, क्योंकि ऑफिसर्स विद हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स, पंचायत राज ऑफिसर्स को लेके सभी ग्राम पंचायत का पंचायत मेंबर्स का चुनाव किया है। अभी हम ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल का चुनाव किया है, अभी तुरंत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल का बिहार में जम्मू कश्मीर में चुनाव करने वाले हैं। वैसे ही आई कॉम्प्लीमेंट NIRD and Panchayat Raj, which has taken many initiatives of various levels of the nation to empower villages. We often come across the incidents of administration and poor service delivery in local governments. NIRD and Panchayat Raj can evolve strategies and policies to overcome all the roadblocks towards achieving the strengthen the grassroots democracy. Nation building process begins at the grassroots. To transform India, the grassroots must be strengthened. The election commissions of state have this important responsibility towards the mission of transforming India. I compliment all the state election commissioners and the Director General of NIRD and Panchayat Raj for this important contribution towards the nation building. I wish to make one submission to the election commissioners assembled here. You need to further strengthen mechanism to check influence of money and use of money to subvert the democratic processes. आज देश में लोकल बॉडी चुनाव में मजल पावर, मनी पावर, फैमिली पावर, क्योंकि गांव डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पिताजी एक चुनाव लड़ते हैं, बेटा एक चुनाव लड़ता है, बेटी एक चुनाव लड़ती है, उनका सिस्टर इला एक चुनाव लड़ती है, ब्रदर इला एक चुनाव लड़ती है। ये डेमोक्रेसी के लिए कोई शोभा नहीं देते। आज एक गरीब व्यक्ति रियली वो यू वांट टू सर्व द विलेज, यू वांट टू सर्व द टाउन इन म्युनिसिपालिटी, ही कैन नॉट बिकम ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे लिए बहुत सवाल है, चर्चा की बात है, एक चैलेंज की बात है। आज म्युनिसिपालिटीज में कारपोरेटर चुनाव में हमारे नागरेड्डी साहब बैठे हैं तेलंगाना के, एक डिवीजन चुनाव में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ये ज्यादा जितना हो सकते हैं इसके जो मजिल पावर, मनी पावर लोकल बॉडीज में इलेक्शंस में कम करने के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर्स का आपका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी नागरेड्डी जी बता रहे थे, आप लोगों को कोई निकाल नहीं सकता। हाईकोर्ट जज का जितना पावर है वैसे ही आपको पावर है, आपको पूरा अधिकार है। इसीलिए आप एक बात, इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद सरकार जो भी होने दो, वो बीजेपी सरकार होने दो, दूसरा पार्टी का सरकार होने दो, कांग्रेस का होने दो, आप लोग कोई डरने का बात नहीं। इलेक्शन ठीक तरीके से होना चाहिए, रियल फ्रीडम होना चाहिए वोटर्स को, जिस व्यक्ति को सेवा कर सकते हैं उसको चुनना चाहिए। ये माहौल देश में होना चाहिए, आपके द्वारा होना चाहिए, राजनीतिक पार्टी वो काम करना चाहिए, जनता के वोटर्स भी वो सोचना चाहिए। मगर मेरा कास्ट का है, मेरा मजहब का है, मेरा दोस्त है,
ये नहीं चलेगा आने वाले दिन में, ये बंद करना पड़ेगा। जो जिस व्यक्ति के द्वारा उस गांव का विकास हो सकता है, जिस व्यक्ति के द्वारा उस वार्ड का विकास हो सकता है, जिस व्यक्ति के द्वारा उस शहर का विकास हो सकता है, उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका द्वारा ये इलेक्शंस में उनको चुनना चाहिए। ये वातावरण देश में आपस में अपन माहौल खड़ा करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा मुद्दा रहते हैं, रोल रहते हैं। इसके लिए आप लोग सोचना चाहिए। हम राजनीतिक पार्टी से आते हैं, हम चाहते हैं हमारा पार्टी चुने, कैंडिडेट हो, कैपेबल हो ना कैपेबल हो, मगर हमारा पार्टी चुनना चाहिए, ऐसा मेरे को रहता है। मगर जनता को मैं अपील करना चाहता हूं आपके द्वारा, मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूं, जो रियल महात्मा गांधी जी के सिद्धांत के आधार पर इस देश का, उस गांव का राम राज्य बनाने का गांधी जी बताए थे, ग्राम राज्य रियल राम राज्य, ग्राम विकास जो हो सकता है वो जब भी राम राज्य हो सकता है। ग्राम विकास किधर हो रहे हैं? अभी मैं देखता हूं कुछ स्टेट्स में पैसे मिलता ही नहीं, जो कलेक्शन करते नहीं, जो हाउस टैक्स कोई सरपंच आज देश में गांव में जाके हाउस टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता है। ये स्थिति राजनीति में माहौल कैसा विकास हो सकता है? आज गांव में एक्शन हो रहे, ग्राम पंचायत का चुनाव का एक्शन हो रहे, जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है, सरपंच है, ज्यादा पैसा किसको देते हैं उनको दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी हो सकता है क्या? दिस इज ए डेमोक्रेसी महात्मा गांधी वांटेड। इसको बदलाव करने के लिए अपन आने वाले दिन में प्रयास करना चाहिए। I wish to make one submission to the election commissioners, assembly dear. You need to further strengthen mechanism to check influence of money and use of money to subvert the democratic process. It is important for us to remind ourselves the values with which our founding fathers have established democratic setup where free and fair elections is the lifeline of the system in the process of expressing public will. I read somewhere money used to play a role in direct elections in Athens, which was the cradle of modern democracy, and Greece philosopher lamented the way of money was being used in elections. I mentioned all these all through the state election commissions are vested with powers to conduct elections for local bodies. The process is more or less same for general elections as well as local body elections. Moreover, the political parties, the voters are also same. Therefore, the issues are also similar through with now it is our responsibility to think upon those aspects which have become a detrimental to our democratic systems and electoral process. मैं अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने के बाद हम 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो पैसे आते हैं, पैसे दिए हैं। आजादी के बाद पहली बार ग्राम पंचायत को पैसा मिला, पहली बार। जो सरपंच इतना खुशी है कि गांव को, आप लोगों को मालूम है, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 45 लाख पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिला है, पहली बार। अभी तक नहीं मिला इलेक्शन बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, दैट इज मेजर अदर इशू। आर्टिकल 370 के कारण पैसे डायरेक्ट ग्राम पंचायत को नहीं मिला, देश भर में मिला, मगर पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला। मैं यही बताना चाहता हूं, आज जो विलेजेस आज जो डेवलप, ठीक तरीके से डेवलप ना होने के कारण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहने के कारण, आर्टिजान्स एटीट्यूड खत्म होने के कारण पूरे शहर की ओर जा रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं। मगर क्या कर रहे हैं, इलेक्शन आए तो हैदराबाद में रहते हैं व्यक्ति, मगर वो 300 किलोमीटर के दूर में उनके गांव में जाके इलेक्शन चुनाव लड़ता है। कैसा लड़ता है? इधर से पैसे लेके जाके उधर लड़ता है, फिर जीतते हैं, फिर हैदराबाद में आके बैठते हैं, फिर गांव को नहीं जाते।
ये सिस्टम है। ये गांव विकास नहीं हो सकता है, ग्राम सभा और ठीक तरीके से नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं इलेक्शन कमिश्नर्स, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, आप लोगों को बोलने का अधिकार मुझे नहीं है। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी है, मैं बिल्कुल नया नया हूं, मगर मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप इलेक्शंस में जो वातावरण, एक वातावरण ऐसा बनाना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मनी मजल पावर नहीं होना चाहिए, कास्ट रिलीजियस मिसयूज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा एक वातावरण लाने के लिए आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा अधिकार दिया गया। आपको मालूम है, सेशन साहब आने से पहले सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कैसा है कुछ भी नहीं मालूम, पहले सुने भी नहीं थे। इलेक्शन बोल तो स्टेट गवर्नमेंट कर रहे होंगे, एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उनके द्वारा पूरा इलेक्शन होता है, गांव के लोगों को नहीं मालूम। इलेक्शन बोलो तो एमएलए कर रहे होंगे, एमपी कर रहे होंगे, हमारे कलेक्टर कर रहे होंगे, ऐसा समझते थे। मगर पहली बार दुनिया को मालूम हो गया, देश में मालूम हो गए, एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन रहते हैं, उनको पूरा अधिकार रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है, पूरा रहते हैं। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सकता है। गांव में रहने वाले राजनीतिक पार्टी को डर हो गया, भाई ये करंट को के ऊपर, पोल के ऊपर अगर झंडा बने शेषन आएगा गांव में, ये स्थिति था। आपको भी ये अधिकार है, आप लोगों को भी ये अधिकार है। लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, मगर आपके मन में, आपके दिल में महात्मा गांधी जी का नारा था, ग्राम स्वराज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किया। आप उस ध्यान में लेकर, एक प्लेट लेकर, मुख्यमंत्री कुछ भी समझे दो, सरकार कुछ भी समझे दो, मैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर करूंगा, ये मेरा अधिकार है, मेरा पावर है मेरे हाथ में, मैं करूंगा। ऐसा एक प्लेट जिले के अगर आगे बढ़ो आप लोग ठीक तरीके से, गांव कैसे से रेदू सकते, गांव में एक पैसे भी खर्च करने नहीं देना इलेक्शन। वोटर को एक पैसा, एक रुपए भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्लान करिए, गांव विकास होगा। क्योंकि 70 साल के बाद आज गांव में, मैं उत्तराखंड उधर जाता हूं भी, गृह मंत्री करा रहे, उत्तराखंड में बॉर्डर में लगभग 1800 विलेजेस खाली करके चले गए लोग, घर खाली पड़े। हमारा सरकार क्या किया, लास्ट 5 इयर्स बॉर्डर विलेजेस में अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले, अच्छा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का उनको पढ़ाई किया है। बच्चे जो पढ़े हैं वो जॉब को हम उधर लोकल नहीं मिलता है, पिताजी को माताजी को लेके घर को ताला करके वो शहर के अंदर आ रहे, बॉर्डर विलेजेस छोड़ के आ रहे। ऐसे देश भर में ये स्थिति है। आज गांवों में जाइए, कोई नौजवान नहीं रहते, सिर्फ बुजुर्ग आदमी रहते हैं, क्योंकि गांव में विकास नहीं है, गांव में ठीक तरीके से सिविल सिस्टम ठीक तरीके से नहीं है। जो आदमी गांव में रहते हैं, जो आदमी अगर गांव का सरपंच बनते हैं, जो आदमी गांव का सेवा करने वाले सरपंच बनते हैं, वो गांव को सेवा करने के लिए वो आगे आते हैं। इसलिए आने वाले दिन में आप सब लोग ये करना चाहिए। आई होप दैट द deliberations of this conclave will help the state to work out effective strategies to bring local body elections to center stage and enable to local bodies to function as a channels of good governance, equality, social economical justice. This will further strengthen our democratic system and march towards the new India. I wish the conclave a great success. Thank you very much. Thank you, sir. We truly feel blessed to be propelled forth with such encouraging words. I request our Director General NIRDPR, Dr. W.R. Reddy, sir, to please felicitate a guest of honor, Shri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, with Tanjavur artifact of Tamil Nadu. The Tanjavur art form is a cultural representation of handmade terracotta items prepared by the women of self-help groups.
This artifact has been bestowed as geographical indicator by the Government of India and are perceived to be good fortune by decorating them in places of work and worship. So we wish you a good fortune, for your good fortune is a good fortune for our country. Thank you, sir. Now I request Shri A.K. Chauhan, State Election Commissioner, Bihar and Chairman Standing Committee of SSCs to please endow upon us his immense experience through his special address. Please, sir.